we have to discuss the test of significance of single standard deviation for large sample. Before this, we discussed the test of significance for single mean and single proportions, two means and two proportions. All the tests for the large samples, and now the test of standard deviation. To test the significance of single standard deviation means we have to compare the standard deviation of the sample and the population. This test is used to test whether the population has a specified value of the standard deviation on the basis of a large sample taken from the population. It means we have to test the difference between the sample standard deviation and population standard deviation. Test of significance of single standard deviation. Single sample will be given and we have to test the difference between the sample standard deviation and population standard deviation. Here, hypotheses are we set the following hypotheses. We set up the following hypothesis. H naught population standard deviation is equal to sigma. H1 population standard deviation is not equal to sigma. Or this is greater than sigma or less than sigma. We may define alternative hypotheses in this way. The main test statistic in this case is the test statistic is Z is equal to S minus sigma divided by sigma upon 2n under root. This follows normal distribution, mean 0, standard deviation 1. S is standard deviation of the sample. Sigma is standard deviation of the population. N is a sample size. Again, we have to compare this calculated value with the table value. If Z calculated modulus is less than Z from table, it means accept H naught. Difference is not significant.
accept H naught, and if difference is significant, reject H naught. And when we reject H naught, we accept the alternative hypothesis H1. We may write the confidence interval कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीनिंग था कि उसको कितना वेरी कर सकते हैं. कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज एस प्लस माइनस. Yes, sir. ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का ऐसे लिख सकते हैं एस प्लस माइनस जेड टेबल वैल्यू at given level of significance. At 5% level, this value is 1.96, and we call it as 95% confidence interval. For 95% confidence interval, substitute here the value of z at 5% level of significance. कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीनिंग क्या है कि उसको कितना वेरी कर सकते हैं कि सैंपल सिलेक्ट हो जाए. एच नॉट इज एक्सेप्टेड, तो एच नॉट एक्सेप्ट होने के लिए उसको कितना वेरी परमिसिबल है, परमिटेड है, उसको कितना कितनी वेरिएशन परमिटेबल है, परमिसिबल है, वो हम चेक कर सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल से. तो हमने डिस्कस किया टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन. सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन मींस सैंपल एंड पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस चेक करना हो. तो अगर उसको चेक करना हो तो हम z डिफाइन करेंगे s माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन 2 एंड अंडर रूट. तो z की वैल्यू फाइंड करें. s इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड n इज सैंपल साइज. तो ये टेस्ट है फॉर लार्ज सैंपल्स. तो z कैलकुलेटेड की वैल्यू को नॉर्मल टेबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे. तो अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं. तो राइट डाउन क्वेश्चन. Is it likely that a sample of 300 items, is it likely that a sample of 300 items with a standard deviation with a standard deviation 5.4 is a random sample from a large population whose mean is 16.8 and standard deviation
5.2. It means we have to compare the standard deviation of sample and the population. Standard deviation of sample given as 5.4. Standard deviation of population is 5.2. Is the difference between the standard deviation significant or not? We have to check this. Calculate further, calculate 95% limits of the standard deviation of such samples. तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे इस सैंपल के लिए. Is it likely that a sample of 300 items, it means sample size is 300, n is 300, with a standard deviation of 5.4. तो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ही गिवन है, सैंपल का मीन गिवन नहीं है. इट मीन्स वी हैव टू चेक द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द सैंपल एंड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मीन भी गिवन है, लेकिन स्टैंडर्ड के सैंपल के केस में ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही टेस्ट अप्लाई करेंगे. Solution: here n is equal to 300, s is equal to standard deviation of sample 5.4, sigma is standard deviation of population 5.2. To define hypothesis H naught, difference between standard deviation of sample and population is not significant. It means sigma is equal to 5.2. H1 difference is significant. Difference is significant. Standard deviation is not equal to 5.2. Standard deviation is not equal to 5.2. ऐसे भी लिख सकते हैं, S is approximately equal to sigma, S is not equal to sigma. ऐसे भी लिख सकते हैं. तो टेस्ट स्टैटिस्टिक इज
The test statistic is Z is equal to S minus sigma upon sigma divided by 2 and under root. S is 5.4, sigma 5.2, sigma again 5.2 divided by 2 into n is 300 under root. To simplify this and compare this value with the table value from normal table, कितनी आएगी वैल्यू बताएं? Sir, 0.942. Yes, 0.942. Now we have to compare this value with the table value. Conclusion. Z calculated modulus magnitude is 0.942, which is less than 1.96. Value of Z at 5%. Level of significance. The difference is not significant. Accept H naught. H naught is accepted. Null hypothesis is accepted. It means sample can be regarded as taken from the given population. तो जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन था वो सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मैच कर रहा है, उसमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है. 5.2 5.4 का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट, इग्नोर कर सकते हैं इसको. And now further we have to write the 95% confidence interval. 95% confidence interval of population standard deviation is S plus minus 1.96 sigma upon 2 and under root. अगर क्वेश्चन में लिख दें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें एस को सिग्मा से चेंज कर देना, रिमेनिंग सेम होएगा. सिंपली एस को सिग्मा से चेंज कर दे तो वो
सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्फिडेंस, and here substitute the value of s 5.4 plus minus 1.96, sigma is 5.2 divided by 600 under root. So when you simplify, we get 5.4 plus minus 0.4173, that is 4.9827, and second value is 5.8173, or sigma lies between this. It means if sigma lies between 4.9827 to 5.8173, then H naught will be accepted at 5% level. For given value of small s, सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन की गिवन वैल्यू के लिए अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हम 4.9827 एंड 5.8173 इसके इन बिटवीन लें तो एच नॉट एक्सेप्ट होगा। ये इसका मीनिंग है। मतलब हमारे पास इतनी वेरिएशन होने की पॉसिबिलिटी है, इतनी वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, ये है इसका मीनिंग। क्वेश्चन में उन्होंने सिग्मा दिया था 5.2, तो अगर सिग्मा की वैल्यू 5.2 से हटकर डिफरेंट कर दें इस इंटरवल में, तो तब भी एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। ये है इसका मीनिंग। क्लियर? Yes, sir. And now write down the test of standard deviations of two samples. नेक्स्ट टेस्ट लिख लें, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस of difference of standard deviation of two large samples. So here we have two samples. Test statistic will be z is equal to S1 minus S2 upon sigma 1 square divided by 2 and 1, sigma 2 square divided by 2 and 2, S1 is standard deviation of sample 1, S2 standard deviation of sample 2,
N1 size of sample 1, N2 size of sample 2. Again, if Z calculated is less than Z tabulated, difference is not significant. Accept H naught. If this is greater, reject H naught. In this case, H naught will be difference is not significant. Sigma 1 is equal to sigma 2. We assume that the standard deviation of the populations from which the samples has been taken are equal. Second, different, not equal. Sigma 1 is standard deviation of the population from which first sample is taken. Sigma 2 is standard deviation of the population from which second sample is taken. तो अगर दो सैंपल्स गिवन हो उसके लिए फाइंड करना हो तो हम ऐसे Z कैलकुलेट करेंगे, फिर कंपेयर उसी तरह होगा 1.96 से करेंगे अगर 5% पर टेस्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन, रैंडम सैंपल्स drawn from two countries gave the following data related to the heights of adult males mean height in inches, standard deviation, number of or sample size, country A, second is country B. .42, 67.25, 2.58, 2.50, 1000, 1200. The question is first part
is the difference between means significant। मुझे मीन का भी क्वेश्चन ऐड कर दिया, जो हम लास्ट लेक्चर में किया वो आएगा। सेकंड इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशंस। Is the difference between standard deviation significant? Actually, we have to test the significance of difference between the populations. Population mean population standard deviation on the basis of the results of the samples। जो सैंपल्स में डिफरेंस है उसके बेसिस पर पॉपुलेशन का आइडिया लगाना। तो ऐसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, मीन का डिफरेंस भी चेक करना, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी करना। तो डाटा गिवन है, सैंपल साइज गिवन है, 2 सैंपल्स गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशंस मीन सभी गिवन है, इसको यूज करेंगे। सॉल्यूशन हियर n1 is size of first sample 1000, n2 1200, x1 bar mean of first sample 67.42, x2 bar 67.25, sigma 1 सॉरी s1, इसको s1 लिखेंगे 2.58, s2 2.50। जो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको ऐसे से लिखेंगे, पॉपुलेशन का सिग्मा से। सिग्मा सैंपल का मीन एक्स बार, पॉपुलेशन मीन म्यू। First, to test the significance of difference between means, to test the significance of difference between means, define H naught null hypothesis, mu1 is equal to mu2, that is difference is not significant। H1 mu1 is not equal to mu2, difference is significant। The test statistic is test statistic
Z is equal to x1 bar minus x2 bar divided by, we have sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. We define this test statistic in previous lecture. This one. Test statistic for difference of means of two samples. This one. x1 bar minus x2 bar upon sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2. Now in this question, sigma 1, sigma 2 are not given, but s1, s2 are given. In case of large samples, here n1, n2 are large. Take sigma 1 is equal to s1, sigma 2 is equal to s2. तो अगर सैंपल लार्ज हो तो उसको पॉपुलेशन अजूम कर सकते हैं, तो उसको ही S1 S2 लिख दिया. तो मोस्टली अगर क्वेश्चन में सिग्मा गिवन ना हो, लार्ज सैंपल हो, तो S1 S2 को ही हम S को ही हम सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू S की वैल्यू ही लिख सकते हैं. और Z इज इक्वल टू x1 bar is 67.42, 67.25 divided by 2.58 square upon 1000 plus 2.5 square upon 1200 and under root of this. To simplify, बताएं क्या आएगा. 1.56 चेक कर लेना. Z calculated modulus is 1.56, which is less than 1.96 at 5% level of significance. Difference is not significant. Accepted. Therefore, H naught is accepted. वैसे फर्स्ट पार्ट में हम डिफरेंस ऑफ मीन्स टेस्ट करेंगे, सेकंड पार्ट में आएगा डिफरेंस ऑफ वेरिएंस, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशंस. Second part, to test the difference between standard deviations
Define H naught, sigma 1 is equal to sigma 2. Difference is not significant. H1 sigma 1 is not equal to sigma 2. Difference is significant. Test statistic is Z is equal to S1 minus S2 divided by sigma 1 square upon 2 and 1 plus sigma 2 square upon 2 and 2. Again, sigma 1 sigma 2 गिवन नहीं है, S1 S2 से ही उसको रिप्लेस कर देंगे. सैंपल का साइज लार्ज है तो जहां S1 ही यूज कर लेंगे. तो सैम्पलिंग में ऐसे अप्रॉक्सीमेशन ही है, तो हम उसको जो डाटा अवेलेबल हो उससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो उसको सिंप्लीफाई करें. 2.58 minus 2.50 divided by 2.58 square divided by 2000 plus 2.5 square divided by 2400 here in under root. When you simplify, we get the value as 1.03. So we have to compare this with the table value, which is less than 1.96 at 5% level of significance. Difference is not significant except H naught. Difference is not significant. H naught is accepted. तो ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है. स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं. तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है जिसमें मीन्स का डिफरेंस एंड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस दोनों लिखा हो. तो दो पार्ट है क्वेश्चन में, मीन भी टेस्ट करना था एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी टेस्ट करना था. तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. मेन पार्ट क्वेश्चन में है टेस्ट स्टैटिस्टिक. उसका क्या फार्मूला है? जो फार्मूला है उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिखा, लेकिन अगर सैंपल का साइज लार्ज हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 गिवन ना हो, तो हम स्मॉल S1 S2 भी लिख सकते हैं. वो हम लिखते थे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल के लिए. तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ किया जा सकता है लार्ज सैंपल के केस में.